So, yeah, we were talking about Easter, that there is a lesson in all these special days that we have on the calendar. And what is it that we can take out of it for our own self learning and to better our lives? So, Easter, like all of you, I think, know कि Good Friday था फ्राइडे को. तो गुड फ्राइडे को क्या हुआ और अब ईस्टर को क्या होता है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो. क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट, एंड देन पूरा महीना जो क्रिश्चियंस होते हैं वो लेंट को फॉलो करते हैं, जिसके अंदर जैसे मुहर्रम है आजकल, मुहर्रम नहीं, जैसे ये सब इनका मंथ चलता है मुस्लिम्स का, वे दे डोंट ईट द होल डे एंड दे ईट ओनली सहर. रात को 7:30 बजे के बाद खाते हैं और सुबह सनराइज से पहले एक बारी खाते हैं, एंड देन द होल डे दे डोंट हैव इवन वाटर. रमजान. तो तो वो जो पूरा उनका भी टाइम है, दैट कोइंसाइड्स विद द टाइमिंग ऑफ द लेंट. उसके अंदर दीज पीपल refrain from all the fun activities, they refrain from loud music, they refrain from entertainment, because they are observing this time as a solemn time. तो उसके बाद जब उन्होंने क्राइस्ट को क्रूसिफाई करके और उनको एक दफन कर दिया था, और उनके केव के आगे एक बहुत बड़ा बोल्डर लगा दिया था, तो ईस्टर वाले दिन when they went again to have a look, they realized that there was no body, there was nothing over there. तो उनकी रिसरेक्शन हुई थी. रिसरेक्शन इज दैट ही रोज फ्रॉम द डेड एंड ही जस्ट वैनिश्ड. तो ही देन अपियर्ड टू वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, जिनको उन्होंने दर्शन दिए और उन्होंने उनको सब कुछ बताया, और उसके बाद वो गायब हो गए. तो वो जो रिसरेक्शन है वो हम सबके लिए इतना पर्टिनेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, कि जब सब कुछ खत्म भी हो जाता है, जब सब कुछ ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद भी हमारे पास होप है, और वहां से हम उठ के बहुत अच्छे से आगे की लाइफ जी सकते हैं. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग एंड माय इंस्पिरेशन ऑफ रिसरेक्शन. कि जब एवरीथिंग इज डन एंड ओवर विथ, एवरीथिंग इज गॉन, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, उसमें से भी कुछ ऐसे एम्बर्स रह जाते हैं, कुछ ऐसे शोले रह जाते हैं, जिनमें इतनी एबिलिटी होती है, इतनी पावर होती है, कि वो फिर से एक बहुत बड़ी आ, आ, आग, जिसको कहते हैं, शोलों से तो आग बनती है, और उससे ही आपकी एक बड़ी जबरदस्त एबिलिटी बनती है, आपके अंदर की एक रिजिलियंस और डेवलप होती है. तो हमको दी एंड को दी एंड नहीं मानना चाहिए. देर इज ऑलवेज लाइफ बियॉन्ड द दी एंड. देर इज ऑलवेज an opportunity to fight after losing the war. There is always opportunity to stand up again after you've been defeated, after you feel everything is over. एक कहीं हमारे पास ऐसे छोटे छोटे मोती हैं, जिनको हमको अपने पास रखना चाहिए अपनी इंस्पिरेशन के लिए. जब बहुत ज्यादा आप फॉर एग्जाम्पल पीड़ा में होते हो, टुडे आई कैन थिंक ऑफ ओनली पेन, फिजिकल पेन, जब आप बहुत पीड़ा में होते हो, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी एंड हाउ इज इट दैट यू आर गोइंग टू ओवरकम इट. क्योंकि कई दफे ऐसे होता है कि जब किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में पेन होती है, दैट पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्क्रीमिंग फॉर योर लव, दैट पार्ट ऑफ द बॉडी वांट्स योर अटेंशन. तो आपने उसको और ज्यादा प्यार देना है. यू हैव टू कीप टेलिंग योर बॉडी दैट आई रियली लव यू. अगर आपके सिर में दर्द है, आपके बैक में दर्द है, आप कभी ट्राई करना ये. जस्ट कीप कॉन्स्टेंटली फीडिंग इट इनटू योर सिस्टम कि आई रियली लव माई बैक, आई रियली लव माई हेड, my head is aching, but I'm going to go on and on telling my head कि I really like it, I really like it. So I'm just trying to break down the resurrection big word into something very small. कि अगर हमारे फिजिकल एलिमेंट भी कुछ होती है, तो अगर हम कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर काम करते हैं और उसको बहुत ज्यादा फ्लड कर देते हैं अपनी पॉजिटिविटी से, अपने प्यार से, तो दैट स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग. एक ये अप्रोच है. दूसरी अप्रोच है कि तुम फिर बैठ जाओ, तुम बोलो अच्छा भाई दिस इज इट,
अब तो ये दर्द है, अब तो ये ऐसी है, अब तो क्रॉनिक है, that's the end of it. I don't know if I'll have a tomorrow ever in my life or not. And then you start living with that sense, you start believing it. But if you start telling yourself, oh, I haven't really loved my back in a long time, I haven't really loved my head, I haven't appreciated all that there is that holds my head together, all my thoughts, all that my body helps me achieve. मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, मेरी मेरी जो बॉडी है और मेरा जो माइंड है वो मेरी हेल्प कर रहा है ना वो सब अचीव करने में. अब जैसे पूर्णिमा आपने बोला कि whatever tough situations you faced, you moved here, आपके माइंड में वो फियर था, आपके दिल में वो एंजाइटी थी whether you be able to do it or not. So you had two choices. You always have two choices. But you braved everything and you said, no, I'm going to overcome this. And suddenly you realize डर के आगे तो जीत है, you know. So then suddenly you see the horizon and you see the sun rising and all the positivity and all the wonderful things that that day holds for you starts unfolding. तो अपनी चिन हमेशा ऊपर रखना, अपने आप को हमेशा प्यार करना, और ये जरूर याद करना कि हम सब के पास एक कल है और हमने सब ने अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाना है. कहीं से भी इंस्पिरेशन मिले, कभी कभी तो एक छोटी सी कीड़ी भी बहुत इंस्पिरेशन देती है. आई हैव हैड दैट इंसिडेंट ऑल्सो. आई वाज जस्ट सिटिंग वेरी बॉग डाउन. तो अगर आपने देखा होगा कि कीड़ी के पीछे कीड़ी चलती है, फिर कीड़ी के पीछे कीड़ी चलती है, एक लाइन में सारी कीड़ी चलती है. और अगर कोई कीड़ी को कोई प्रॉब्लम होती है, इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, तो दूसरी कीड़ी उसको अपने पीठ पे लेकर चलती है. So, you know, ants are supposed to be one of the strongest living beings, क्योंकि वो अपने से ज्यादा भारी चीज उठा सकते हैं. They carry a little piece of sugar, they carry all the मीठा. उस इतने से पीस को वो जो उनसे ज्यादा भारी है वो उसको उठा के चलते हैं, और लाइन में चलते जाते हैं, गिविंग ईच अदर ऑल द सपोर्ट. सो अगर हम अपने दिमाग खोल लें, अपनी आंखें और अपने कान, अपने सेंसेस खोलें, तो हर कदम पे हमारे पास इंस्पिरेशन है. And there is always a better and a more wonderful tomorrow for all of us. And that's what I always tell people. May your tomorrow be better than your today. May your today be better than your yesterday. That is what we all have to also try and do. May I be a better person than I was yesterday. And may I be a better person than I am today for my tomorrow. तो ऐसे 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 चलते चलते we will keep climbing those realms of awareness, and one day, right Anu, the spirals are going to take us higher, the spiritual spirals by Radha Joshi. Yeah. Yes, and then we shall all be in it together. So Purnima, welcome. It'd be wonderful if you show us your face. Yeah, let's put the name to the face. Purnima ji. On Jane Fonda that basically said that who keeps me healthy, who keeps me in my sanity, who keeps me driven. These are my girlfriends around me. So apparently, she said that girls, and especially girlfriends, they really keep me healthy, like health wise, actually healthy. If there's a back pain, they won't think about it, they'll talk it out, they'll be vulnerable to each other. If there's like, okay, my husband's having an affair, then again, they'll be open about it, they'll cry it out, have ice cream. But it's always those girls who have stood by Jane Fonda, that's what she said in that reel. Yeah, yeah. But like if I had to share an incident, so this morning itself, I got to know one of my mentors passed away. So yeah, so I ended up calling a very close friend of mine who is a girl, and this reel was roaming around, and I saw this reel as well, and I called her up and I said that either you can put me down or either you can pull me up but get me out of this grief, because I've been grieving since what 8 a.m. now. So but I was like, oh, I have to attend this session, I have to like be here. And
Let's just, talk it out. Why not? And she said, yeah, Swati, you're doing this thing now, attend it, talk it out. And I said, chalo, let's see. And that's all she said. One line. And I also believe कि जो तुमने सुनना होता है ना उस वक्त, the universe just gets that to you. Either you'll read it in a book or you will meet somebody who's talking about it. कहीं ना कहीं से वो जो तुम्हारे लिए जरूरी चीज होती है उस दिन आपके पास पहुंच जाती है. Yeah. So I feel that you should just let everything flow into you and you should be going with the flow. जो कुछ भी आपका है आपके पास आएगा, जो कुछ आपने सुनना है वो आपके पास आएगा. पर लाइक इफ यू रेड द एल्केमिस्ट बाय पाउलो कोल, उसके अंदर यही है दैट यू गेट साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स. Mm. You get signs all the time. So if you are aware of the signs, like if you believe in numerology and your angel numbers, तो कभी कभी आप बहुत ऑफन अपना डेट ऑफ बर्थ देखते हो नंबर्स में, कभी कार के पीछे, कभी कहीं पे भी इट्स रिटर्न. कभी यू सी लॉट ऑफ ट्रिपल वंस, यू सी ट्रिपल टूज very often, triple five. So each and every number has a meaning. If Mm. you could just search on Google with angel numbers, you will know that all these things have a meaning. If you see a butterfly repeatedly, if you find a coin, if you find a feather, all these things are little signs. So, and they all have a meaning. And if you're having a repeated dream, try and analyze it. उसके अंदर भी कभी कोई एक एनिमल होगा या कभी कोई एक बर्ड होगी which has a very pertinent meaning. So you should try and remember all these things because the universe is trying to speak to you. It's trying to get to you. It's trying to get you a spiritual message. So you should open all your channels and you should wait for these things to come to you and try and recognize them. है ना? है ना? Because I was telling Swati and Dhani before you joined that Anjali was such a ball of energy yesterday and pulling people. And तो कभी कभी वो होता है ना कि मैं इतना लो फील कर रही थी और मैंने अंजलि को वहां पर देखा, लाइक मेकिंग सो मच एफर्ट फॉर कि हाँ सब तक ये बात पहुंचे. एंड इट वाज सो exciting or happy moments. एंड देन आई फेल्ट लाइक कीप गोइंग इस तरह से ऐसे लगा. तो वो जो ये बात है ना कि द यूनिवर्स इज टेलिंग यू, गिविंग यू मैसेजेस, and it gives you through the people around you, through the whatever the nature around you. So yes, definitely. And the numbers also, they may have personal meaning as well. There are general meaning and then there are personal meaning. So those birthdays Anjali is referring, or birth date, those numbers are like very personal क्योंकि हम झट से उसको पहचान लेते हैं. तो जिस चीज को हम झट से पहचान लेते हैं, if you believe or trust that there are guides or your personal, say, angels around you, then they follow a pattern, like whatever you have in your memory chip. They will put those signs around you that you can relate to them. So yeah, you can have personal signs. Absolutely. And I have a little story here from my school days. There was this teacher, she was called Mrs. Varki. She was our physical education teacher, okay? और हमारे स्कूल में एक कंपटीशन होता था, हम उसको क्रॉस कंट्री बोलते थे. इट वाज लाइक अ क्रॉस स्कूल काइंड ऑफ कंपटीशन जिसमें हमको भागना होता था फॉर अबाउट हाफ एन आवर. So it was a big deal, for all these dainty girls to even walk all that distance. Am I right, Tarani? Please correct me if I'm wrong. So we used to go around our school. Then there was a church outside. उस church के आसपास भागते थे हम. तो दो तीन ऐसे पूरे हमारे को चक्कर लगाने पड़ते थे compound के. तो हमारी जो मिसेस वर्की थी, she used to stand very precariously at the last stretch of the race, and she would hide behind the bushes. And because that's the time when all these girls used to start slowing down, कोई रुक जाता था, कोई चलने लग जाता था. So she used to hide behind the bushes and she used to only just say, keep going, keep going, keep going. And Anuradha, you just said that word and it brought this memory. And throughout my life, whatever I have faced,
Mrs. Varki's words have stayed with me. Whenever I'm so low, कुछ ऐसा मुश्किल समय होता है, तो मेरे अंदर से हमेशा यही आवाज आती है, keep going, keep going, keep going. You're not going to sit, you're not going to walk, you're going to continue running. So this has been such an inspiration. And in fact, I wrote this story for Reader's Digest also once, and I sent it across to them as an inspirational story. उन्होंने छापी नहीं, अब that's their loss. But it still inspires me, and I want it to inspire many, many more people. तो हम सबको जुड़े रहना है, हम सबको शेयर करते रहना है. आई नो कभी कभी लगता है बड़ी फ्रिवलस कॉन्वर्सेशंस हैं, लेकिन फ्रिवलस कॉन्वर्सेशंस आल्सो पिक यू अप. They really I pick you think up most of because the random conversations actually pick you up. I end up I talking saw that yesterday, Swati. I saw that yesterday, Swati and I saw one of the brilliant qualities in her. We were sitting at a coffee shop, and there was this young gentleman sitting next to me, and he had a very attractive looking notebook. So Swati ne bola, I can talk to any random person. And I was quite surprised. I'm like, how does she do it? Let me just see. She saw that fellows, and see, Swati, this is that notebook. It's yeah, yeah, so this is like that notebook. So Swati dear says, excuse me, where did you get that notebook from? And that yeah, gentleman said, yeah, I got it from Varanasi. She says, I have the same notebook and I Banaras. got it from Varanasi या Banaras, by the way. तो Okay. उसने बोला मैं वहां से लाया हूँ. So she says, मैंने कहीं और से लिया. मैंने कहा मैंने कहीं और से लिया, but we all have the same notebook. And we got chatting. Yeah, And I I said, mean, wow. कि I कितनी mean, छोटी दुनिया है, only if लेकिन you हम लोग believe same thing. that we are all one, you can start Yeah, talking to anybody. And I really appreciate that quality in her. And she does this on a regular basis. She I do goes it to a every coffee day. shop, she takes a coffee, and she just observes people. और कभी कोई interesting होता है, कुछ होता है, she just starts a conversation. I thought it was such a beautiful romantic thing to do. I really liked it. So I wanted to share it. And I think it's really awesome. Swati, I keep it up. think people It's also think brilliant. But I will definitely go with you to Blue Tokai one day. मैं कॉफी नहीं पीऊंगी, उनकी कॉफी बहुत गंदी होती है. But I oh, will definitely come. that guy and I had this thing in common that, hey, we've seen each other at Blue Tokai. And I'm like, oh shit, I've seen you on Blue Tokai. When? And I also think Yeah. like sometimes you just sit, there's a empty chair in front of you, and a lot of people they see that empty chair and either they start feeling lonely, like I don't have someone to talk to, and I wish that there was someone across the table I could convey this message to that I'm tired, I'm tired of escaping, let's say, or running around and stuff like that. But like when you just, look back at nature, you forget that empty chair that's in front of you for some time at least. And then you just observe nature and you look at these houses and the facades of those houses and people, they're just going by, dogs sleeping around, like small, small things, chai ka cup, kisi ne cup pheka aise, you feel bad. But small things and you Distractions. forget. There are Yeah, distractions. Yeah, absolutely. forget for Yeah. some time that hey, I was lonely and I had to say the fact that I'm tired, you know. So I think that is also really nice. Otherwise, it's just I think even when you're observing people, sometimes it can be creepy to other people. They'll see that "Uनको देख रही है? Like, why is she looking at me like that? And then they'll question that do I have a pimple? Okay, something in my teeth, something wrong. And then they come up to you and ask, where are you lost? And then you think, Arey, where am I lost? So I think that also happens quite a lot. Yeah, quite true. So would anybody like to close anything, any thoughts that you have at the end of this session? Purnima, why don't you start? We want to hear you. How did you feel? आई थिंक इट्स ग्रेट सबके एक्सपीरियंस जानने को मिले हैं अभी. आई थिंक राइट नाउ अभी मैं काफी लाइक सही हूँ. कुछ ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ.
इट्स जस्ट अभी मेरे पास ज्यादा कुछ कहने को है नहीं, बिकॉज ये काफी नया है ऐसे, यू नो, फर्स्ट टाइम मैं ऐसे सेशंस एंड ऑल किए कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी से ज्वाइनिंग ऐसे सेशंस नहीं हुए हैं, कभी मैंने ज्वाइन नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो मुझे काफी अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मुझे सबके एक्सपीरियंस जानने को मिल रहा है और काफी कुछ सीखने को मिल रहा है इसमें से। एंड आई होप मैं आगे भी जो है सीखने को मिलेगा मुझे। आज के लिए इतना, बट थैंक यू सो मच, आपने काफी कुछ अच्छा बताया। जस्ट कीप गोइंग ऑन, वो वाली चीजें मुझे काफी अच्छी लगी, एंड आई होप मैं इसे इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, ऐसे चलती रहूँ पॉजिटिविटी के साथ। जरूर जरूर, थैंक यू हाउ सो नाइस। और मच। आपके पीछे बहुत बढ़िया लाइट शाइन कर रही है, तो पॉजिटिव तो आप रहोगे ही। Oh, बहुत जबरदस्त actually, ऑरा फॉर्म हो रहा है आपका, नोइंगली और अननोइंगली, बट इट्स रियली लुकिंग नाइस। So lovely, so wonderful. Thank you so much, Purnima. Thank you, Dharani. I hope your son rocks. I hope he really does his exam well and he gets into the one which is right opposite your house. He Yeah. deserves it. वहीं आ जाएगा Thank वो. you. God bless you. Thank you. God bless you. So good Thanks, to Anu. see Thank both you. Purnima Yeah. and Swati. God bless you, both of Yes. you. Swati is on. She's on. I mean, she's I know, got I onto know. our I'll catch caravan. up with her. Yeah, yeah. हाँ हाँ, तो फिर अब जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, हम सब इकट्ठे मिलेंगे, एंड इट बी रियली नाइस, Okay. है ना स्वाति? Yeah. देन यू हैव लॉट्स ऑफ पीपल टू टॉक टू. Yes. Yes. So thank you, Anu. Thank you so much. Thanks, Swati, for being here, and we are all there with you. Please do not go into a spiral downwards. Go into a spiral upwards. हम सब हैं. आना जाना लिखा रहता है. कभी कोई आ जाता है, कभी कोई चला जाता है. तो कोई जाना जाता है तो जरूर कोई ना कोई नया जना आता है to take that place. Yeah. So God bless you. सब अच्छा होगा. आज जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, and you never know. You know, actually, sometimes it is redemption for the person who goes. Yeah. So we just have to pray wherever they are, they should be happy and they should get whatever they've desired for in the next birth that they take. That's what we believe. So thank you very much. God bless all of you and happy Easter. And bas khush raho और connected रहो.